Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Hello and welcome. Today in this video we have got another paper of class 10th mathematics, that is 2017, and in this paper we are going to solve question number 3 that belongs to the linear equations and inequality. So as we can see, we have got the two parts of this question. So let's solve the part A of this year paper. So in part A we have got a linear equation x minus 1 over 5 that is equals to 3 into x minus 5 over 3 minus 5x. So simplify करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम right now let's leave it as it is and right hand side पे 3 multiply कर देते हैं into the bracket, so we'll get 3x minus 5 minus 5x. so इस 3 को हमने इसके अंदर ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई किया, then we will get x minus 1 over 5 is equal to 3 minus 5x is minus 2x minus 5. then 1 over 5 को इक्वेशन के इस तरफ शिफ्ट करते हैं, minus 2x को इक्वेशन के दूसरी तरफ. so x plus 2x will be equals to minus 5 plus 1 over 5. then further simplify करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी 3x के एंड राइट हैंड साइड पे हम LCM ले लें अगर इन दोनों फ्रैक्शंस का, so we will get minus 25 plus 1. so 3x will be equals to minus 24 divided by 5. 3 will be divided on the other side, so x will be equals to minus 24 divided by 5 into 3. so 3 minus 3, 3 8s are 24. so x is equal to minus 8 over 5. so this is the correct answer for this part A. Now let's see the second part of this question number 3. So for the part B we have the modulus equation. Modulus of 4x minus 1 is equal to modulus of 3x minus 2. So first of all we will find the value of x, then we will see how to verify our solution. so फर्स्ट स्टेप में हम इस न्यूमरेटर को जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. so 3x minus 2 modulus and 4x minus 1 modulus, this will be equals to 1. then नेक्स्ट स्टेप में हम इस मॉडुलस को एक्सपेंड कर देते हैं और वी कैन टेक दिस होल इन अ सिंगल मॉडुलस. so 4x minus 1 and 3x minus 2, this is equal to 1. now let's expand the modulus. modulus को expand कर देते हैं. so modulus expand होके हो जाएगा 4x minus 1 divided by 3x minus 2, that is equal to plus minus 1. so first of all हम plus 1 के साथ इसको simplify करते हैं, then minus 1 के साथ simplify करेंगे. so 4x minus 1 over 3x minus 2. so 4x minus 1 will be equals to 3x minus 2. 3x को यहाँ शिफ्ट करते हैं, minus 1 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं. 4x minus 3x equals to minus 2 plus 1. so x will be equals to minus 1. so ये हमारे पास एक solution आ गया from this मॉडुलस इक्वेशन. देन सेकेंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हुए 4x minus 1 over 3x minus 2 will be equals to minus 1, और 4x minus 1 is equals to minus 3x plus 2. हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया.
देन शिफ्टिंग करते हैं टर्म्स की, 4x plus 3x will be equals to 2 plus 1, 7x is equal to 3 and x is equal to 3 over 7. So we have got our solution of this modulus equation. Once x is minus 1 and the other is x equals 3 over 7. देन नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन में हमें कहा है कि वी हैव टू ऑल्सो वेरीफाई आर सोल्यूशन। सो हमें अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करना है। हमारा सोल्यूशन था x इक्वल्स माइनस वन, सॉरी हाँ, x इक्वल्स टू माइनस वन एंड x इक्वल्स टू 3/7। इन दोनों वैल्यूज़ को हम वन बाय वन पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, and after putting this in this equation we will get we can easily verify our solution. So verification करने के बाद हमारे पास जो second value of x है, यहाँ से equation verify नहीं हो रही and this value of x verify this equation. So finally the solution set of our question will be equals to x equals -1. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to